गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आई एम सिविल इंजीनियर, माय नेम इज सूरज सिंह। आई एम स्पीकिंग फॉर भारत इंडिया, फरीदाबाद एनसीआर, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसेंट इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन 3 स्टेट्स। जो 3 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बारे में मैं कुछ फाइल शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं पहले शेयर लगा दूं उसमें। अभी तो मैंने रिकॉर्डिंग की है। शेयर्स में अब जाता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सी किस तरह से शेयर हो सकती है। ये फाइलें मैं कर रहा हूँ शेयर आपके साथ। और ये है फाइल ए स्टेट सीट वाइज माइक रिजल्ट इन फर्स्ट इज दिस, देन इट इज, I don't know how to do it. And then this other one, this is results here, of course, yes, it is there. And then there is seat wise, it is seat wise, and there is another one, and it is here. You can say, I tried to check these files and let us see how does it work. Well, it is now screen sharing. I've started. And first of all, I want to discuss with you. मैं आपसे चाहता हूँ डिस्कस करना। आप देख रहे हैं यहाँ फाइल एक है। ये फाइल जो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट फाइल। एंड यू कैन से it's not fully opening. That's not the problem. Yes, it's fully open now. I calculated this just today. Before I calculated something else here, I like to show you. पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कुछ टेबल्स। Following information has been sent to SC and EC. SC means Supreme Court and EC means Election Commission. ये मैंने आपको दिखाया था। ये 3 स्टेट्स का रिजल्ट जो आया है, उसमें क्या क्या हुआ। 25% सीट क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 25% सीट्स। एंड दिस इज रिजल्ट्स which are based on leads and trails which I have taken from file, and that file also I will show. This is in fact today I worked out on these 3 states, which is very important, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको समझ के कि आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ देश का मामला है, दोनों भाषा में चलना चाहिए। और ये बेस्ड ऑन ईसी शोन, जो ईसी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हमें बताया गया है, ये मैंने उसके बेस पे लिया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया। ये जो टेबल अपडेट किया मैंने अभी, इसमें मैंने लिखा है बेस्ड ऑन ईसी शोन लीड्स एंड ट्रेल्स। ये है स्टेट आपकी, आप कह सकते हैं ये वाली स्टेट छत्तीसगढ़ हेयर, मध्य प्रदेश हेयर एंड राजस्थान हेयर। तीनों के अलग अलग टेबल्स, बहुत छोटी टेबल है। एलिमेंट्री कैलकुलेशन है जो आपको समझ आ जाएगी। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट एलिमेंट्री कैलकुलेशन, एंड दैट इज आई कांट सी विद दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ दिस इज मार्जिन्स, परसेंटेज मार्जिन्स बीजेपी। छत्तीसगढ़ में, इन स्टेट छत्तीसगढ़, they have got 4.04% margin in comparison to Congress. That is result on website of Election Commission. You can go and see that. And similarly, that is, just a minute, just a minute, 4.04 it is. It's written here. I'll show you here as well. 4.04 margin, that is in state Chhattisgarh. MP, there is 8.15% margin, 8.15% मार्जिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और राजस्थान में 2.16 मार्जिन ये वहां पर दिया गया है। और जो लीड दी गई है पार्टीज की, उसमें ये बीजेपी का कॉलम है, ये कांग्रेस का कॉलम है मार्जिन्स का। और ये आप देख सकते हैं, ये लीड्स जो जिसके बेस पे मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, वो करूंगा। और साथ में इसी का रिकॉर्ड्स में ये 3 परसेंटेज आई है, मैंने आपको दिखाई, और उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्या है। 4.04, अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे कैलकुलेट किया। जैसे बच्चे कैलकुलेट करते हैं मेंसुरेशन में कि अगर ये है तो इसका ये हुआ। मान लीजिए इतना वेरिएशन है तो इसका इतना आंसर है, अगर एक वेरिएशन है तो इसका आंसर, और अगर इतने वेरिएशन है तो यू गेट माय पॉइंट। हम लोग लगाते हैं ना, हिसाब करते हैं। एक्स, अगर एक्स है तो आई हुआ आंसर। जैसे कहते हैं 4.04% मानते हैं, अगर वेरिएशन और परसेंटेज डिफरेंस 4.04% है तो इसका मतलब ये है कि 4.04 वैल्यू है वेरिएशन की, अलग होने की, डिफरेंस की, और 100 मूल है। 4.04 100 मूल है। ऐसे ही अगर ये 4.4 ना होके ये 1 हो
तो इसका 100/1.4.04 होगा, जो ये आंसर आता है। और अगर ये जितनी वैल्यू यहाँ दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी वैल्यू दी है। ये वैल्यू जो मार्जिन की है, वही मैंने मार्जिन यहाँ लिंक किया है यहाँ पर। ये आ रहा है D26 और ये है D26। अगर ये मार्जिन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू इतनी होगी जो यहाँ पर लिखा है, करीब करीब आप देखें, ये होगी 2 करोड़ 91 लाख 83,317, 2 करोड़ 91 लाख 83,317 बेस्ड ऑन 4.04%। इसका मतलब इसके अंदर हम, जैसे यहाँ मैंने लिखा 100 हमारे बेसिक्स हैं, और 4.04 4.04 इज एडेड टू दिस सो दैट इट इज एक्चुअल फिगर 104.04, जिससे हम कंपेयर करेंगे कांग्रेस के वोट को। ये बीजेपी का हमने यूनिट लिया, और इसका मतलब दिस इज ऑल्सो टू बी एडेड 2575, and these two are also there. This is this much. Now Congress is 4.04 lower, and that is this much. I reduced there 1.0404. So this value comes here, and these two are added here. Congress and BJP are added here. So this is figure 594,98,008. 5 करोड़ 94 लाख 98 हजार 8, 59 5 crores 94,009, I'm sorry, 5 crores 94 lakhs 98,008। ये टोटल पार्टीज की बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी की नहीं मैंने ऐड की इसमें। ये छत्तीसगढ़ का स्टेटस है। यू गॉट माई पॉइंट? बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमिश्नर दिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो लीड्स की कौन सी फाइल है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि किससे मैंने लीड्स दिया है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जहां तक मैं समझता हूँ, लीड्स की फाइल अगर इसमें आएगी सीट वाइज, तो ये है, ये देखिए ये फाइल है, ये फाइल लीड्स की है। इसमें ये मार्जिन है, मैंने वोट्स का डिफरेंस जो लिया है उसके अंदर दिया हुआ इसी का, और ये मैंने कांग्रेस और बीजेपी के अलग अलग कॉलम्स में यहाँ डाल दिया है। और इसको अगर आप देखेंगे, ये सारी लीड्स हर सीट की लिखी है, और एवरी सीट, एंड जितने भी पेजेस उसमें इसी के हैं, मैंने उसके हिसाब से इसको कॉपी करके यहाँ लिखा है। कॉलम ये आपका है M+N, एम को एन से डिवाइड किया है, दिस ओवर दिस। ये इस हाल किसी को लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर सम इसका आता है। इसी तरह पेज 1, पेज 2, पेज 3, ऐसा करके हम लास्ट में पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ यू विल फाइंड टोटल डिफरेंस हियर दैट आई हैव टेकन इनटू माय कैलकुलेशंस। जो मैंने अपनी कैलकुलेशंस में लिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बात है कंसंट्रेशन की, सीरियसनेस की। अगर आप करते हैं तो, नहीं करते तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती हम नहीं कर रहे। मैं अपना इंटरेस्ट देख के, ये देखिए ये आ गया आपका आंसर, छत्तीसगढ़ का ये आंसर रहा। ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के, सॉरी जो भी है, कांग्रेस या बीजेपी, जो मैंने वहां लिखा था, एक पार्टी की है, एक पार्टी की है, और ये 1.25% डिफरेंस। और ये यहाँ पर ये आपका ये जो मेन टोटल आया इन पेजेस का, total of pages of Chhattisgarh, and that is 54 according to election commissioner data, not my data. This I have shifted to that table. Similarly it is for MP, and MP का टोटल मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं दिखा सका तो, if I am able to show you, I like to show that one. That is also very important one, because that is root calculation I have taken into my account, और उसी से आगे बात चलेगी। ये हुआ क्या है, ये देखिए उससे निकला, ये आपका है राजस्थान का, ये राजस्थान का है, और शायद निकल गया इसमें बीच में, क्योंकि एक्सेल बड़ा फास्ट चलता है, तो कई बार रो दिखाई नहीं देती है, इसलिए गायब हो जाता है कई बार। लेकिन गायब होने वाली बात है नहीं, वो सारी कैलकुलेशन यहीं पर है, उसी से डाटा लिया गया है। ये झटका मारता है एकदम एक्सेल शीट, तो कई बार कंफ्यूजन सा हो जाता है कि कहाँ गायब हो गया, लेकिन गायब होता नहीं है, ऐसा लगता है कि गायब हो गया। MP is here, this is MP, and MP is here, so let's go slowly. Page 5,
Indore, Indore. Where is this? That's in problem. This is here. Three. Here is 70. You can see these seats here and 9 page 9, page 9 here, 10, 10 page, 11, 11 page, 12, लगता है कहीं मिस हो गया हो, वह कहीं ना कहीं इसी में होना चाहिए, जाएगा कहाँ। कैलकुलेशन की है, शायद कहीं डिलीट हो गया हो सकता है, फिर भी कोशिश करूंगा मैं दोबारा दिखाने की, कहीं एरर आ गई है इसमें, लेकिन है वो यहीं कहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बस ये रहा, दिस से छत्तीसगढ़ का आंसर है, और ये तो मैंने दिखाया आपको, और इसी तरह से ये रहा आपका, ये दूसरा हो गया एमपी का आंसर, अब ये राजस्थान का नीचे है, तो वो दिखने में दिक्कत आ गई, तीनों आंसर है वहां पर एनीवे, वो मैंने आपको दिखा दिया, तीनों जाएंगे कहाँ इसमें से। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बात की अभी आपसे इसकी, ये तीनों वैल्यूज में यहाँ लाया, ये वैल्यूज यहाँ पर आई वोट्स मार्जिन की, और इसके हिसाब से आप यहाँ देखिए, अब ये टेबल मेन है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये तीन टेबल छोटी छोटी है, छोटी छोटी से मैंने प्लान करके इसी से कनेक्ट किया है, इनको लिंक किया है। जैसे ये मार्जिन 4.0 ने भी आपको एक्सप्लेन किया, 4.04 जो है, और ये टोटल दिखा कि यहाँ पर बीजेपी एमपी दोनों क्या गई है। इसी तरह से आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज 4.04, अगर वेरिएशन है, मीन्स वो कहते हैं जी लीड्स है या वेरिएशन है, जो भी आप कह लीजिए, अगर 100 वैल्यू ओरिजिनल है तो 4.04 की वैल्यूएशन हो गई, वेरिएशन 1.04.4 आ गया। और ये हम जैसे कैलकुलेशन करते हैं इकाई में, वही है, ये वन अगर है तो दिस ओवर दिस आ गया, अगर वन है तो ये आ गया और ये टोटल आ गया। और अगर दिस वेरिएशन जो मैंने यहाँ से ली है, तो ये 117, दिस इज 117, अगर ये आ गया, और ऐसे 424 ये यहाँ की है, और 212 ये यहाँ की है, अगर ये वेरिएशन इसमें है, इसका मतलब ये इतने वोट हो गए, और उससे 4.04% इनके हो गए, टोटल वोट इन दोनों के मिलकर यहाँ हो गए, इसी तरह से टोटल वोट इन दोनों के मिलकर यहाँ हो गए, और टोटल वोट इन दोनों के मिलके, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ अभी, इन दोनों के वोट मिलके यहाँ हो गए। और आप ये देखिए, इनको मैंने यहाँ लिंक किया सबको एक लाइन में लाने के लिए, ये वैल्यूज दिस वैल्यूज आर सेम, एंड सम ऑफ दीज थ्री इज हेयर, you can say 30 Q Q O U and AA. This is O, this is U, this is AA is here. You can say here AA like this, we can't see because my photo is there. So what I say is that if you see this figure 36 65 24 96 8, 36 करोड़ 65 लाख 24,968। हाँ, कोई बात नहीं है, अपने घर में तो 36 करोड़ 65 लाख 24,968, 36 करोड़ 65 लाख 24,968, ये जो फिगर आ रही है आप सोचिए जरा, मैं ईवीएम की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं, और जो फाइल कह रही है उसकी, मैं अभी परसेंटेज, वो कह रहा है कि इतने परसेंट डिफरेंस है, और इनकी जो लीड्स कह रही हैं ये रिजल्ट है। अब आप ये मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं? मैंने लीड्स भी कैलकुलेट की, लीड्स तो दी हुई है उसमें, उनको सम अप किया दोनों पार्टीज का, और ये रिजल्ट आपके सामने, और परसेंटेज से मैंने देखा कि सीट कितनी आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जैसे मैंने इन टेबल पे कहा कि अगर मान लीजिए 25% वेरिएशन हो रही है सीट्स की, तो इतनी सीट्स होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में, और दूसरी जगह राजस्थान में 90 भी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल सीट्स कितनी है, एक्चुअल सीट्स इतनी हैं बीजेपी को जो मिली है और जो कांग्रेस को मिली है,
ये 25% की टोटल सभा की सीट है। ये तो मैंने एक सैंपल दिया यहाँ पर, इस सैंपल से है। और ये यहाँ इसमें हमने बताया कि ये जो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये 46.27% छत्तीसगढ़ में बीजेपी और 42.23% छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। दिस इज डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस, ये उनका दिया हुआ डिफरेंस है, मेरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया। जो परसेंट डिफरेंस दोनों पार्टीज का है पोलिंग का, और जो टॉलीज वो दिखा रहे हैं, जो कि एक होनी चाहिए, एक नहीं आ रही है। एक बात तो क्लियर हो जाती है, 6 सीट डिफरेंस तो है इनको। बीजेपी और कांग्रेस का जो 19 सीट जो दिखा रहा है यहाँ पे, वो 15, जो 4.04 की वजह से है, वो 15 होना चाहिए। इधर 78 होना चाहिए, जो कि 97 है। यहाँ 19 है, और ये 97 है या 46 है। तो इतनी सीटें डिफरेंस में आ रही हैं तीनों स्टेट्स की। छत्तीसगढ़ में 15 आ रही हैं, जो ज्यादा दी गई हैं। एमपी में 78 आ रही हैं, जो ज्यादा दी गई हैं। राजस्थान में 42 आ रही हैं। जिसका मतलब छत्तीसगढ़ में 15 सीटें उनको दी गई हैं, एमपी में 78 दी गई हैं, राजस्थान में 42 दी गई हैं। और ये तीनों मिलकर 136 होती हैं, 100 करीब करीब। और आप कह सकते हैं अगर टोटल देखें 519 यहाँ एंड 136 यहाँ, तो करीब 25 या 26% का डिफरेंस सीट का आ रहा है। और वही डिफरेंस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि 25% का फर्क आया है। लेकिन यहाँ कुछ और कहानी हो रही है। वो हमने, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, एक इमेजिनरी ऑर्डर दिए गए, जो लीड्स की टाली है, लीड्स की टाली और ईवीएम की परसेंटेज डिफरेंस की टाली में कोई मिलाप नहीं हो रहा है। There is no relation established between votes counted by EVM, which they are saying this is difference between two parties. They published on website, EC website, but that should meet with tallies. Tallies, हम आप कहेंगे इसमें ओरिजिनल वोट्स तो दिए नहीं, टालीज दी हैं लीड्स एंड सेल्स की। अगर इतनी लीड्स इतनी हैं और वो परसेंटेज हमें दी हुई है, वही परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं, जैसे 4.04%, 8.15% एंड 2.1, these are percentage difference between BJP and Congress. I am using these percentages to compete on this your leads. Which leads are there? And these leads are there as I shown you. These are leads for BJP, and some of leads I am saying, not one seat lead. Whatever seats have been given to them, whatever have been awarded to them, this is sum total in each state of बीजेपी, and this is for कांग्रेस। यही फिगर हम यहाँ लाए हैं क्योंकि हम दोनों को लिंक कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर कितने वोट काउंट हुए होंगे। तो हम जाना कि हमारा जो ये स्टेट है छत्तीसगढ़, इसमें इतने वोट काउंट हुए होंगे, इसमें इतने वोट काउंट हुए होंगे, और इसमें इतने वोट काउंट हुए होंगे। क्योंकि उन्होंने वोट्स नहीं दिए, कोई बात नहीं है, मैथमेटिक्स तो बता देगा। मैथमेटिक्स को किसी का डर नहीं है, मैथमेटिक्स चुप भी नहीं रहता, गलत भी नहीं बताता, जो होता है वही बताता है। दो और दो चार होते हैं, पांच नहीं होते, ये भी मैथमेटिक्स बताता है। सो व्हाट वी आई एम सेइंग इज वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस इशू। और जो मेरी कंप्यूटेशन कहती है, मेरी क्या मैथमेटिक्स की कंप्यूटेशन है, मेरी अपनी थोड़ी है, मैं थोड़ी मैथमेटिक्स हूँ। ये कहती है कि देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है तीनों स्टेट्स में। जो वोट उन्होंने इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से किए जाने चाहिए वोट, ये रिजल्ट तब आएंगे, ये जो परसेंटेज तब आएंगे, ये टॉलीज तब मिलेंगी। तीनों स्टेट्स में वोट्स 36 करोड़ 65 लाख हों। ये वोट्स छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ 95 लाख के आसपास हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं पढ़ रहा, 5 करोड़ 95 लाख के आसपास। इधर 10 करोड़ 81 लाख के आसपास, और इधर 19 सॉरी 10 करोड़, और ये 19 करोड़ के आसपास। ये वोट अगर होंगे, इनका सम 36.65 करोड़ होगा, तब वो लीड्स जो दिखाई हैं और जो परसेंटेजेस उन्होंने शो की हैं डिफरेंस की, तब सेट होती हैं। क्या इन तीनों स्टेट्स में 36.65 करोड़ बीजेपी और कांग्रेस के जो पोल किए गए हैं, इतने वोट्स हैं?
ये क्वेश्चन उठता है। ये तो मैं सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और भी पार्टीज हैं, छोड़िए उनको, नेग्लेक्ट कर दीजिए। कहने का मतलब 37 करोड़ वोट्स वहां हैं या 80 करोड़ वोट्स वहां हैं, एक कल्पना है। पूरे देश में ही 90 करोड़ वोट्स हैं, तो क्या सारे वोट्स वहां चले जाएंगे? हंसी भी आती है और मजाक भी होता है कि इसी ने कुछ सोचा नहीं, और उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बस जो दिल में आया लिख कर दे दिया। काउंटिंग की गई, मैं मानता हूं, काउंटिंग की लिमिट वहीं तक है कि इनकी डिफरेंस ऑफ वोट्स इतने हैं, वहीं तक की लिमिट है। उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रह गया। इतने लोग बैठे होंगे, एजेंट बैठे होंगे, टाइम लगता है, घंटों लगते हैं, और लास्ट में उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि ये इसकी जीत इतने वोट से हुई है। उन्होंने कहीं भी टाली नहीं दी, कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं दी, ये नहीं बताया कि जो वोट्स पोल हुए हैं और जो इनका सम आता है वोट्स प्लस लीड्स का, क्या वो इतना है। ये मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूं कि कितने वोट होने चाहिए थे जब ये वोट डिफरेंस की परसेंटेजेस और ये लीड्स आपस में मैच करें इक्वेशन में। अगर ये नहीं मिलता तो इसका मतलब भाई हेरा फेरी हुई है। ईवीएम से हुई या नहीं हुई, मैं अभी इस बात पे नहीं बात कर रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से ईवीएम की काउंटिंग तो हुई है, वो चाहे गलत ईवीएम हो या गलत डाला जैसे भी हो, लेकिन रिजल्ट्स जो डिक्लेयर किए गए हैं वो ईवीएम से नहीं किए गए हैं, वो अपनी राजशाही से किए गए हैं कि बस कर दो, किसका ऑर्डर है किसका क्या, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमिश्नर की होती है और किसी की नहीं होती है। इलेक्शन कमिश्नर ने आंख बंद करके, दिमाग बंद करके, मैथमेटिक्स को ताला लगा के अपने जो दिल में आया वोट लिख दिए। जहां तक मैंने सुना है इन तीनों स्टेट्स में 11 करोड़ वोट्स हैं। मैं नहीं जानता सही कितनी है, अब एज्यूम कर रहा हूं, जो मैंने न्यूज में सुना है 11 करोड़ वोट्स हैं। और ये 36 करोड़ आ रहे हैं, आप देख लीजिए 3 गुना से ज्यादा। अब आप सोच लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मीन्स जो भी रिजल्ट आए हैं वो फेक रिजल्ट है, सारे रिजल्ट फेक हैं। 135 सीटों का घपला है। 135 चीजें, कम से कम 135 सीटें बीजेपी को ज्यादा दी गई हैं। मैं कम से कम बता रहा हूं, और भी हो सकती हैं। ये जो कह रहा है मेरा टेबल, ये उसी तरफ डायरेक्शन कर रहा है कि इतनी बड़ी चालबाजी खेली गई है। और ये तो मैंने पहली बार चेक किया है, हो सकता है इससे पहले भी ऐसा ही कुछ होता रहा हो। अगर आप चेक करेंगे तो तेलंगाना में बिल्कुल सही परसेंटेज मैच कर रही है। और जहां तक मैं समझता हूँ होता क्या है कि इनको जहां जीतना होता है ये इसी हिसाब से जीतते रहे हैं। ईवीएम तो शायद एक मात्र बहाना रहा होगा, मैं नहीं जानता। ईवीएम में भी अगर हेरा फेरी आप करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट नहीं आ सकता, कोई नहीं मानेगा इस बात को। 3 गुना रिजल्ट, देख लीजिए आप कितना आ रहा है। अगर ये आप इसको डिवाइड कर दें, दिस, अगर मैं कहूं कि दिस फिगर 36, लेट मी से 30 plus 36.65, if divided by 11 crores, what it gets? 3.3, exactly one third। अगर आप ईवीएम से भी हेरा फेरी करेंगे तो क्या ये 1/3 मैंने कहा है ना, ये 11 है, अदरवाइज ये 3 गुना हो गया। क्या ईवीएम 3 गुना रिजल्ट दे सकती है? ये एक बिग क्वेश्चन है। ईवीएम है कोई, नहीं हुई, ईवीएम रिप्लेस हुई, नहीं हुई, वो सब बातें समुद्र के उस तरफ हो जाती हैं, क्योंकि हमने ईवीएम के रिजल्ट को यूज ही नहीं किया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। मेरे जो दिल में आया, हमारे एक प्रोफेसर होते थे हमारे कॉलेज में, वो कहते थे मैंने आपके एग्जाम पेपर बस दे दिए, नंबर दे दिए, मार्क्स दे दिए, मैं नहीं चेक, किसी ने कहा चेक ही नहीं करते हैं, लिस्ट, रोल नंबर 1 सो मेनी मार्क्स, रोल नंबर 2 सो मेनी मार्क्स। इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हिसाब से बोला डाटा वाले को कुछ भी लिख दो, इतनी से 50,000 की लीड इसको दे दो, 70,000 की लीड इसको दे दो, 20,000 की लीड इसको दे दो, करते 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 ये आंसर आ गए। ईवीएम हैक होगी नहीं होगी वो बात की बात है, ईवीएम को यूज नहीं किया गया काउंटिंग के लिए, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं अपनी कैलकुलेशन में। मैंने इसी को चिट्ठी लिखी है।
ईसी से जवाब भी आया है। उन्होंने कुछ मेरे से अपने पर्सनल डाटा मांगे, वो भी मैंने दे दिए। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया। कंप्लेंट का नंबर मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो रही इसकी बात। अभी ये तो सीट्स की फाइल हो गई जो मैंने आपको दिखाई। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये फाइल। देखिए, ये है ये है वो जो मैंने फेसबुक पर लिखा है। फेसबुक पर लिखा है, उसका यूआरएल है। आप फेसबुक पर देख सकते हैं। अगर यूआरएल से अगर आपको आपकी वीडियो में क्लिक हो जाता है, या आप फेसबुक पे जाके वैसे भी देख सकते हैं। भारत इंडिया, 3 states elections manipulation tables are given below. Table number of votes polled by BJP and Congress is this: 37, 65, 24, 9, 6, 8, which is impossible. 36.64. It is impossible. Mensuration mathematics used to calculate biggest fraud by EC without caring what EVM resulted out. एक तो बात ये है। और दूसरा, अगर आप देखिए, ये मैंने लिखा आगे के लिए और ये लिखा अभी के लिए। पहले मैं पढ़ता हूं जो लिखा अभी के लिए। पहले भी मैंने पोस्ट किया था। आई जस्ट एक्सप्लेन बिफोर ऑल्सो। SSDR भारत इंडिया state elections November 2023. Thanks and congrats to election commission for your work. ये मैंने सुप्रीम कोर्ट भी भेजा है फॉर इंफॉर्मेशन। गिफ्ट बाय इलेक्शन कमीशन टू बीजेपी, quantifying to 135 seats free of computations. Congratulations BJP for this undue gift to BJP. EC is too powerful and therefore help BJP इन irrelevantly and arbitrarily। irrelevantly मतलब होता है कोई लिंक नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है हेल्प करने का। और आर्बिट्रली का मतलब होता है किसी कैलकुलेशन को, किसी लॉजिक को, किसी फार्मूले को यूज नहीं करना। जैसा कि आप कह सकते ईवीएम की रिजल्ट को यूज नहीं करना और अपनी मर्जी से चाह जो लिखना है लिख के दे देना, उसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी मैनेजमेंट। EC has robbed these seats from Congress and transferred to BJP. Really great constitutional job done by EC. EC must be congratulated to conduct great robbing for its master BJP, and that is PM. Voters have been robbed of respective most significant constitutional rights. Judiciary must take suo moto action against EC. Very attractive official robbers institution. No reporters in this country understand calculated robbery caused by EC. Political parties do not know about how to work out necessary computations. Crime does not mean anything. Public raise your required voice for justice। ये तो एक रही बात। और दूसरा पेज है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। SSDR भारत इंडिया 2023 onwards and political elections। and this SSDR, you know very well, its preamble definition: sovereign, secular, socialist, democratic republic. I'm using full name. We have an unreliable election commissioner, EC under illegal control of Mr. Modi. Voters must be cautious because EC uses every method to get undue benefit to whatever Mr. Modi so desires. EC does not work per requirement, but to please his master, Mr. Modi. People must be careful for respective votes. In particular, north part of this country has brought itself to highest degree of emotional sentiments. People are swayed by impact of emotions. North part comprises 320 Lok Sabha seats, which sets which sets are considered by Mr. Modi. His vote bank, I'm sorry, it is seats, not sets, I apologize, which seats are considered
North part comprises 320 Lok Sabha seats, which seats are considered by Mr. Modi his vote bank. Deposit if Mr. Modi has to survive. Fixed deposit. These seats are fixed deposits if Modi government has to survive. In South, Mr. Modi and EC have no solution to crack hard nuts. But but North part must also think of its future because youth too make this part. If youth ignore reality and support Mr. Modi, they must accept dark employment future. People of North must also think seriously about this issue or else they shall suffer as well at hands of Mr. Modi. In his age time, Mr. Modi cannot make for people and EC works for him. Means making is very difficult for public by Mr. Modi. He can only break. EC works for him. EVM can be made a serious issue, but EVM alone is not a prime issue because order of Mr. Modi to EC remains significant. In three states elections also, Mr. Modi's order to EC worked more than abuse of EVM review results and find EC abuses of power. EC does about what Mr. Modi requires to do. EC least bothers about calculations for votes and results justification. Results justification, again I say, because no one asks this question. Political parties are deaf and dumb. Mr. Modi knows well that these parties do not have any spine. If you cannot understand this fact, ask EC to issue justification statements which give a tally of votes polled and votes counted to justify declaration of victorious candidates. EC just uses its constitutional power and arbitrary methods to declare winning candidates. Nobody bothers about process and votes tallies. Often EC does not care even for EVMs, manipulations, and declares results arbitrary, which means whatever is required by Mr. Modi, results are declared accordingly. Complaints must be filed with EC if voters think that satisfactory results have not come in. I have done for first time because I could not convince herself about three states' results. Arbitrary declarations plus EVM manipulation are this sum of two, you can say. Arbitrary declarations, as I said, just you issue whatever certificate, and EVM manipulation are reasons for what I said. छोटी बात नहीं मैं कर रहा, आपसे बहुत रीजनेबल बात कर रहा हूं और ये बात ये मैंने आपको दिखा दिया पहले। इतना फर्क, 3 गुना का फर्क जो हम नहीं सह सकते, पॉसिबल भी नहीं है। 3 गुना का फर्क कौन सह लेगा? ये आप ध्यान से देखिए, सोचिए इस टेबल को। अगर मैं आपसे गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिए मैं कहाँ गलत हूँ। ये देखिए टेबल, बड़ी छोटी सी टेबल आपके सामने। You can understand what I have to say. This such I speak a little in English. You can very well read this table as I showed to you. I have shown you all tables before I published, before I submitted, and this was first table which shows difference in vote percentages, and that is shown here for each state. And accordingly, I calculated how many seats should be there if we just, you can just spread this difference in votes equivalent or uniformly, then you can say C difference should be this. C difference should be this. Means 19 here in place of 35, 97 here in place of 66, and 46 here. This should be actually, this is shown difference, and this should be 4 in fact, you can say.
If you say here, this is 19 minus 15, then say there should be a difference of 4. There's seats difference, and there's 19 now. 19, in this case, this is 19, but it should be 15. It should be 15. Seats in numbers. EC's gift to BJP arbitrarily is here. And this is in 19 plus 15 is 54. This difference of 15, there's 78, and here's 42. So 136 seats have been given. And that is very important point. And we have to be very calculative here. We have to understand what I'm saying. And then it is, if you calculate for all these assemblies, re-assemblies, 25% seats, these should be seats about, because this 90 seats here, and here should be this C formula I've taken, C cell, and these should be represented almost 130. You may say it is even more than 25% here. It is 26.15%. 26% seats have been gifted without any logic, without any reason to BJP. And also here, this is what I say. This is information I've taken from file as I showed to you here. And this file is there. This information which I'm showing to you was taken from this file. And based on this information, I worked out here. And this I could not understand before, means how these differences come in here. You may say 1.847 of this time means this is, yes, BJP or Congress. I say BJP is the Congress. This over this is this over this is this over this. How can you say that? 3.362% more than Congress here. In this 84% more than Congress here, BJP, and 64% more than Congress here in Rajasthan. So 84% more in Chhattisgarh, 362% more in MP, and 64% more Rajasthan. This verse says, but I was not convinced. I stopped that EVM cannot give such results. This is not possible. So this is just recorded information, and this is also fake certification here based on this. And this is clearly indicating that if nobody cared in EC, I'm sure no one checked this, nobody calculated out. They just issued certificates based on this tally, and this tally means EVM are just for formality's sake, not for results sake. And it is here, you can say 36 crores vote, and this is, hey, this is figure for Chhattisgarh, this is figure for, you can say, MP, and this figure for that. So this much has come, which is very much bloody, you can say, I can say, this is bothersome. I cannot tolerate this, believe me. I cannot tolerate this, really. And nobody can believe it, nobody can accept this. And that's what I said here, that you have to understand what I'm saying. If you cannot understand, I cannot explain to you. Some people should be mathematically oriented to understand. And it's really, I'll come back here now. I think you got some information. आपको शायद मिला जो मैंने समझाने की कोशिश की. अब आप समझे नहीं समझे वो एक अलग बात है. मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की हिंदी में. I'm trying to explain now that whatever elections have been conducted in 3 states, that is Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh, these are real elections, but results are not real. That's what I say. Elections might be, there might be gambling, there might be bungling, there may be EVM problem, there will be some other problem, or many technical problems. Those could be there, which are more than 50,000 according to some reports. And of course, Apex Court has directed High Court to take care of that. But that is complaint-based care. I have also filed my complaint. That complaint is there. And I got message yesterday itself that your complaint has been registered, and my complaint has been sent to officers, and wherever it was required has gone. And I'm thankful for that. At least EC took action. But because EC may not be understanding, or he might not understand my mathematics, and well, they didn't ask me anything till now, why I did all this. But today also, I did not send this portion of 3 boxes to EC. I did that. I could not send because I thought, means I was not clear, means how this difference of tallies come. I really, being an engineer, experienced engineer, because election poll votes are not given. Percentage difference is given, but how many votes have been polled, that's not given. So how to calculate that?
was my question to myself. You think yourself, I mean? So what I think I applied mensuration because we have percentage, but we don't know what's percentage difference they have between two parts. And I'm not saying I'll calculate for entire assembly. No, other parties are there. I did not calculate for them. I just applied my formula or my application, my equation to BJP and Congress because difference is given for them. There's major difference. Other parties differences in points and that is very nominal, which will not make much difference. So what I did, as I explained to you, 4.04 say is a variation, and then how much it should be 100. You got my point. If there's 4.4% difference or 4 point whatever percent difference is there, it is on 100. So 4.4 goes to 100. And if it is one say, so this is 100 over 4 point, that one. And if it is X or you can say whatever is given in sum of tally, that is this one. So I get that figure. So that difference come in and votes come in. So combination of two says these were votes polled by BJP or by Congress. That is given based on election, each seat results, which I know are fake, but it is official. These are not EVM based results, I'm sure, because EVM cannot give difference up to 3 times. If you say hacking, I understand electronic machines can be hacked, everything can be hacked, accounts can be hacked, online accounts. There's nothing that cannot be hacked. Even in our banking system, we don't use direct keyboard, This keyboard, we don't use in banking, they don't suggest. There's no force. No. I can use, but they say try to use virtual keyboard because virtual keyboard cannot be, you can say, linked by hackers. So what I'm trying to say is that hacking can be done. And hacking can be done on EM also, but I'm not expert. I'm not saying that. I'm not a software engineer, but it can be done. So simple. Assume it can be done. Even then, I'm saying you do hacking. It shall not give you results to 3 times. Ah, cannot be possible. Up to 5 to 10% or say up to 20% adjustment can be made through EVM or maybe programmed accordingly. It cannot give you variation 3%, 300% or more. And that point hit my mind means how this is possible. What election commissioner is? I don't know. What returning officer? Okay, you can say returning officer is only for one constituency. Fine. So what our CEC is, what our ECs are, they do not understand any mathematics. This is not trigonometry. This is not physical mathematics. This is not chemistry-based mathematics. No, this is simple mathematics where 2 plus 2 equal to 4, just like we used to calculate in past. Means, just simple equations you have to use this value over this value into that value. We get unknown value, right? X into Y is equal to Y into Z. Use this. Here also you saying, oh, 4% is variations and original is 100%. How much, if this is required, this is available, what should be the happen? So it is so simple. But I don't know, our country people, our officers, our leaders, our political parties, our judiciary, I don't know, or our 130 crores citizens. What do they do? I do not know, and I cannot know because I cannot think on behalf of others. I can think on behalf of myself. How many percent people know maths? What knowledge EC has? What knowledge political parties have? They know well. One thing is clear. One question is clear that EC did not think on this, did not contemplate anything, just declaration was important and they declared what could happen. They might have given some data to data entry operator, data entry person who must, okay, just start read anything, say maybe, okay, so this you get a lead of 5. If they use lead, I'm saying, so provided they use, okay, if there's a lead of 10,000, don't write 10,000, write 3 times more. They could be winners. Write 3 times more, write 4 times more.
so that there should be no delusion. Yes, if leads were less, okay, every seat is led just by 100 votes or 500 votes. Let us say in margin of 500 votes or 100 to 500 votes. In that case, it is very difficult, very difficult. And it's okay, fine. But here, it's clear announcement, this fabrication results are available. It's fabrication based. I don't know why, on what basis EC lost common sense. Why did EC not apply its mind? And why did political parties, and particular, I say Congress and BJP, they did not apply their minds? And that's also too bad, because maybe BJP did all this, so they didn't think at all. Or maybe they don't understand mathematics. It's not easy sometimes, contemplation should be there, conception should be there. If conception is not clear, you cannot say that this has been done. And that's where i I was shocked. I say you have to calculate it. I did calculate. So my conclusion is, this is just fake, and all results are fake. EVM results may be there, hacking may be there, difference may be right. I'm not saying no. Difference between polling is right, BJP polls and Congress polls, but that difference is not reflected in results. Means that is only formality, as I said, and I am sure they did not hack much in this. There may be rules broken, there may be something else seal broken, but I am sure, because it is so less difference. 8% maximum, 4%, 2 point something, which can be expected in elections. But those results in which BJP might not have taken this long tally, maybe they were somewhere around majority, or maybe somewhere Congress around majority B. But they had to declare that BJP won all three assemblies, and they did this by keeping eyes closed, keeping my close. And when you are in turmoil, when you have to fabricate something, when you don't think anything, you cannot think in that case, because you are in state of nervousness. You are not cold mind, or you have done it long back, then it's fine. But I think they did with a couple of days. Even if they replaced machines, I'm sure this result would not come, would never come. But it has come. And this is beauty that I'm saying. I'm excited. In fact, this might have happened before also. I never noticed. Nobody noticed. Maybe in 2019 elections of Lok Sabha, this might have happened. And certainly it's going to happen this time also. Forget EVMs. They just give according to my wish. Oh, I give it according. I need 350 seats in Lok Sabha. Design accordingly. I need 170 seats in Madhya Pradesh, designed accordingly. I need 115 seats or 125 seats in Rajasthan, designed accordingly. This is instruction to EC. Whatever you do, I want the result. Don't worry, we'll take care of this. Who raises question? Nobody can raise question, but mathematics can raise questions. Mathematics cannot be defeated, cannot be challenged, just like sciences cannot be challenged, but counting can be challenged. There should be tally. EC has not given any tally. So I cannot blame 100% EVC, is electronic voting machine even, but this can be blamed also. To some extent, these would never give you this result, which is available. Never, never, never. This can be abused. But in this case, just to show people that it is Modi's way, it is Modi's face, that BJP is winning. Congress is go to hell. Congress is going to hell. Well, I think Modi must also understand mathematics. In addition to EC, Rahul must also understand. These political leaders should understand maths. Otherwise,
can do nothing in life. I'm not saying it's big mathematics. It is very simple, but confusion exists. Sometimes, value of zero is not understood. Maybe they said do it 3 times, or they just can do it 10 times. Okay, lead of 5,500, make it 50,000. Simple. Okay, lead is 20,000, make it 120,000, or make it 80,000, make it 1 lakh. This happens. In Lok Sabha, it may happen. Okay, lead is 50,000, make it 5 lakhs. What do you do? Who's going to check? That's what I say. If you want sincerity in results, if you want true results, reliable results, in that case, only answer is use of ballot papers, which is foolproof. It can be counted whatever number of times, and voter remains sure that wherever voter wanted to vote, it has gone to that candidate. And that is very important point, which we should not forget. We should respect that one. I think already 45 minutes, so no problem. So मेरे भाइयों दोस्तों, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है. I am not politician. I don't belong to any political party. And in future also, I'm no plan as such. I'm engineer profession, a professional engineer. But first time I tried to check it. That's my mistake. I never cared in past because what to do, you don't know. But this time I thought that I should consume some time on this. I should use my time for national interest, because these elected members, if they go based on fake results, they shall not be thinking for people of this country. They shall never think. वो कभी इस देश के लोगों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वोट का तो खाली फॉर्मूला है, वोट तो खाली देने के लिए है, उसकी काउंटिंग तो होगी ही नहीं. काउंटिंग तो वही होगी जो हमारे साहब ऑर्डर दे देंगे, मुझे इतनी सीट चाहिए. जैसे आप कह रहे हैं 400 प्लस, हो सकता है इनका प्लान हो, मैं नहीं जानता जी. 400 प्लस सीटें आनी चाहिए, जैसे भी आए. वोट आप करा लीजिए मशीन से, जो मर्जी ड्रामे कर लीजिए, लेकिन मुझे रिजल्ट से चाहिए. और मेरी लीड्स कम से कम 4 लाख की होनी चाहिए. कह सकते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है, नॉर्थ पार्ट जो हमारे देश का है, उत्तर भारत, वहां ये सब चलेगा, क्योंकि हम लोग इमोशनल बहुत हो जाते हैं, भावना में बह जाते हैं. हम लॉजिक को नहीं समझते, कभी कभी समझते हैं, लेकिन आमतौर पे हम बह जाते हैं भावनाओं में. 320 सीटें ऐसी हैं इस देश में, जो मैंने कहीं न्यूज में सुना, नॉर्थ एरिया की या कुछ और, जो ये कब्जा करना चाहते हैं. साउथ में किसी भी स्टेट में इनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं. वेस्ट बंगाल में इनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं. हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ मिल सकता है, मैं नहीं जानता मिलेगा नहीं मिलेगा. लेकिन जैसे आप नॉर्थ में कह सकते हैं, पर्टिकुलरली यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हो सकता है बिहार में. बिहार वाले के नॉर्थ में पूरा नहीं आता, लेकिन फिर भी हिमाचल में, हरियाणा में, दिल्ली में, यहाँ से इनका कोशिश यही रहेगा कि ये सारी सीटें छीन लें, नहीं तो इनके हाथ में सरकार आने वाली नहीं. दक्षिण में 150 से ज्यादा सीटें हैं, वो इनके हाथ नहीं लगने वाली, और शायद और भी जगह, कई जगह इनके हाथ नहीं लगने वाली. इसलिए इनको ये डर है, और शायद उसी डर के चक्कर में इन्होंने ये घपला कर दिया. एक लिमिट तक करते तो शायद पता नहीं लगता, कह देते भाई ठीक है, हमारे को मेजोरिटी मिल जाए, हमें 170 सीट का क्या करना है. लेकिन नशा था 150 प्लस, वो नशा ही मारता है. इन्होंने नशा पी लिया इस बार. इन्होंने सोचा नहीं कि नशा पकड़ भी सकता है कोई. हालांकि अभी तक न्यूज में कहीं पकड़ा नहीं गया है, ना यूट्यूब पे. सब ईवीएम के पीछे लगे हैं, सब कोर्ट में जा रहे हैं. जाइए, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है कोर्ट में जाना, जाइए. ईवीएम तो कब से सही आए, लेकिन साहब का ऑर्डर जरूरी है, ईवीएम नहीं. ईवीएम तो हम सही कर देंगे, सबके साथ भी कर देंगे, लेकिन इसी को ईवीएम से कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं मिलने वाला. दिखाने के लिए इलेक्शन है, लेकिन साहब का ऑर्डर है,
400 प्लस तो 400 प्लस आएंगी। पहले इनके जो ऑर्डर थे उतनी ही आई हैं। और हिस्टोरी हिस्ट्री हमेशा रिकॉर्ड जमाने की करते हैं, इनकी आदत है कि नहीं जी, हमें तो बहुत हिस्ट्री करनी है। और यही होती है बात, इनको हिस्ट्री चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ 30 और 20 50 मिनट बंद होने वाला होगा ये वीडियो, कोई बात नहीं है, जितना चलता है चलने दो। बाकी हम देखते हैं कहाँ पे जाता है, कहाँ पे क्या होता है। मैं आज अपने ये कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता था। अगर कोई देखता है तो ठीक है, नहीं देखता तो भी ठीक है, कर कोई क्या सकता है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और मैं कहूँगा, अब मैं इस वीडियो को बंद करूंगा ये कहकर, फिर मैं कह रहा हूँ, दिस रिजल्ट्स these results of 3 states are fake results. These results should be condemned. But who shall do it? Can Supreme Court do it? Can High Court do it? Or can people force them? I challenge it. These 3 state results are fake. 135 seats have been unduly given or awarded or gifted to BJP. This is my conclusion. And you can see again, if you want to write to me something, you can write to me on my mail. That is Suraj. I'm speaking Suraj. Suraj. Again, I'm saying Suraj Suraj underscore engineer ENGINEER. So again, I say Suraj underscore engineer Suraj Suraj underscore ENGINEER at yahoo.co, not com, yahoo.co.uk. Again, I say Suraj Suraj underscore ENGI underscore symbol. Don't write underscore. ENGINEER at yahoo.co.uk. And now I am going to close this talk for time being. And I like to see, because I have to record it first, then I have to convert it through, and then I post it on Facebook or elsewhere on YouTube. Thank you very much. जय भारत। केयर कीजिए इलेक्शन में, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया है, धोखा है, पूरा धोखा। वी आर बीइंग चीटेड, होल नेशन इज बीइंग चीटेड। धोखेबाजी चल रही है, बीजेपी को हर हाल में जीतना है, उसके लिए से कुछ भी करना पड़े। माइंड रख लीजिए, मोदी को जीतना ही है, चाहे हेरा फेरी करे या जो भी करे। इसीलिए उसको कुछ सोचता नहीं है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हाथ जोड़ने, ड्रामे करने, शोर मचाना, हिंदू बनना, ये बनना, ये सब ड्रामेबाजी है। और मैं उसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।